everyone, so let's move towards our today's topic, which is secretion by the secretion from intestines. Now in some books the secretion of the small intestine and the large intestine are separated, but I will tell you both of these in the same lecture, because it's very small topic and this topic is very easy as well. Now, so basically the intestine, which is small intestine, large intestine, consists of Brunner's gland and goblet cells. Goblet cells are also called as crypts of Lieberkühn. So they will secrete mucus and they will help in lubrication, protection, and obviously when bile secretion enters into the intestine, the nutrients from the bile will also reabsorb by ileum and jejunum through villi. Obviously villi are present. Villi क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो इलियम और जेजुनम में होती हैं, जेजुनम और इलियम में होती हैं, और उससे क्या होता है जो बाइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं. तो देयर आर सम डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल इन द इंटेस्टाइन लाइक सक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज. सो ये जो सारे माल्टेज हैं, सक्रेज हैं, आइसोमाल्टेज है, लैक्टेज हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में होते हैं. ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती. तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ म्यूकस रिलीज़ होता है जो कि हमारी फीसिस की एक्सक्रीशन में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है. ठीक है, दिस सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनको एंट्रोसाइट्स कहते हैं. तो वहाँ से ये सिक्रीशन बनती है, रिलीज़ आउट होती है. एंड द टोटल सिक्रीशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1800 milliliter per day, and secretion from the large intestine is around 200 milliliter per day. तो ये सारा सिस्टम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा होता है. लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली क्रिप्स ऑफ लेबरकन भी मौजूद होते हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं रिलीज़ म्यूकस में, म्यूकस की रिलीज़ में. और नॉट ओनली दैट होल प्रोसेस इज़ ऑब्वियसली कंट्रोल बाय पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन. नॉट ओनली दैट, जो हमारे जो ब्रेन है उनमें न्यूक्लियाई होते हैं और इन सारी सिक्रीशंस को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. So like I said, this is very short topic. Till then, work hard, study hard, and good luck. This was the whole topic regarding the small intestine, the large intestine, the secretion. Till then, work hard, study hard, and good luck. Bye bye. Thank you.